Present. Manya Mantri ji. Thank you, sir. Laid on the table of the House. Thank you. First supplementary. Please be brief in your question. Sir, in his answer, the Honorable Minister has said the price of CNG at Delhi has increased by just 1.30%. Sir, in 2021, the price of CNG was increased 4 times. Please question Mr. R. Rajan. Yes. That's why I'm asking. On February 8, 2021, the price of CNG was increased from 49.90 to 49.40 per kg. The highest CNG price was recorded in Mr. R. Rajan, please question. Question. Raised in 115. Sir, my question. CNG is considered to be an eco-friendly and cost-effective fuel compared to diesel and petrol. The very purpose of encouraging the use of CNG is to reduce pollution and is much cheaper than diesel. Mr. R. Rajan, your question has not come till now. My question is whether the government has taken steps to bring back the prices of CNG to rupees 50 per kg and would like to know the total compressed CNG. Thank you. Please be brief in your question. Manya Mantri ji, jawab bhi briefly hi denge. Sir, I am entirely in agreement with the honourable member that the government should encourage more consumption of compressed natural gas because it's relatively a cleaner fuel. Although there is a debate in the West whether even that's an entirely green fuel or not, but I won't get into that. It is for that reason, sir, the government has ensured. The reference period in the question was the last 18 months. And the government has ensured that whilst global prices were witnessing turbulence, massive increases, shortfall, honourable member just now in his supplementary referred to an earlier period than 18 months. There was a period when there was a lockdown, and lockdown prices don't reflect reality prices. For instance, during the lockdown, the crude price came down to $19.56 a barrel, and then it shot up to 128 and 130. Sir, we were able to do this for two reasons. We rationalized our system of calculating cost in April 23, and as a result of which, whilst the global prices were $53.51, the Japan-Korea, I'm citing Japan-Korea because those are two large consuming markets, and China is also part of that. One market to the east of India, Japan, Korea, China. The other is the Western India market, which is west of India towards the Middle East. Both those prices were very high, $53.51 per million metric British thermal units, and the domestic gas price was much lower. It was 83% lower. The average price also was 69% lower. Yes, it is our constant effort to provide more gas available for domestic cooking purposes and, sir, for the transport sector, and we are committed to make the green transition. In fact, our trilemma is to ensure availability, affordability and sustainability. And the increased gas which is being provided, we raise the gas available to the CGD sector and transportation sector by 2.5 times, 250%, sir. So I'm in agreement. We are making that, and we are ensuring that Indian gas prices are way below the market prices, global market prices. Thank you. Second supplementary. Please be brief. Sir, my second supplementary question. I would like to know from the Honourable Minister whether the government has initiated any drive for increasing the use of CNG vehicles in the country and to provide any incentive, concession, subsidy to encourage people to switch over to CNG vehicles from diesel. The total number of CNG vehicles in the country as of now, the number of CNG vehicles are expected to hit the road before 2030. Thank you, sir. Sir, there is an autonomous process of transition taking place. If you look at the number of CNG vehicles, at the time when international CNG prices went up, there was an apprehension that people would stop buying CNG vehicles. That didn't happen. And the very fact that we can make gas available, natural gas available for the transportation sector at reasonable prices, not linked to market global prices, that itself acts as an incentive. The same is happening also with electric vehicles, but the issue of giving incentives
I think the most important incentive you can give is to make the energy which these vehicles consume available in plenty, and we are taking our overall use of gas in our energy matrix from 6% to 15%. So we are going down that, giving specific incentives, etc. Those are the subjects, I think, of other ministries. But I'm sure the honourable member is aware that that does not pertain to my ministry. Thank you. Dr. Sikandar Kumar. Dr. Sikandar Kumar. Thank you, sir. With your permission, I would like to know from the Honourable Minister of Petroleum and Natural Gas that is there any mechanism to decide the CNG prices? If yes, then what is that and how the CNG prices are determined? And secondly, what initiative the government has taken from time to time in order to stabilize the CNG prices? एक ही सवाल पूछना था, please, माननीय मंत्री. Sir, I'm quite happy to answer both because they are interlinked. Sir, the position prior to April 23 was that Indian gas prices were based on 4 hubs, namely US Henry Hub, Canadian Alberta Hub, UK NBP and Russian gas market. And the prices used to be fixed over a 1-year reference period every 6 months. Now, the difficulty with that was that these were not aligned to the Indian condition. And out of these 4 hubs, 2 of them, sir, the UK NBP and the Russian gas market, stopped operating after the one after the Ukraine-Russia war, and the other one because of the North Sea oil difficulties. So we took some very far-reaching decisions, reforms. In the month of April 23, we decided to delink the Indian gas price from these 4 hubs, and we aligned them to the Indian crude basket. In other words, 10% of the Indian crude basket. And as a result of which, we were able also to fix the prices every month, and the price of oil now has a price of gas has now a floor and a ceiling. The floor is $4 MMBTU, and the ceiling is $6.5 MMBTU. This immediately resulted in the price in the month of March coming down from March price, the April price, because we took these decisions in April, coming down drastically. Sir, we are doing many other things. For instance, the number of CNG stations has increased from 738 in 2014 to 6,159, which is a growth of 735%, sir. Sir, the area covered by CGD, which is the domestic gas availability, that has gone up, sir, from 5.47% of the national Indian national territory to 88%, and this is an increase of 1,508%, sir. The population covered by CGD in 2014 was only 12.81%. It is now 98%, and this is a growth of 665%. So whichever way you look at it, sir, the gas infrastructure, the pipelines we've laid, the amount available, all that is on the increase, sir. Thank you. Mani Shri Jawahar Sarkar. Thank you very much. I would like to ask the Minister how much disturbances on the Red Sea. हमारी केस वर्किंग नहीं, पहले से माइक काम कर रहा है, पूछने दे, please. Mike, sir, I would like to ask the Honourable Minister how much the disturbances on the Red Sea route, the Houthi and other attacks on the Red Sea route, are affecting the West Indian market of gas and petroleum crude, since he has raised the issue of $19 per barrel. Thank you. Both of them. Thank you. $19.56, I should have added, per barrel as the lowest point during the economic lockdown. I'm talking about the period of 2020, I think March to 21-22. Because the global situation as a result of the pandemic was in a situation of chaos, there was no consumption, so the price came down to $19. Insofar as the developments in the Red Sea area are concerned, sir, I have been asked this question outside this august house, and my answer has always been, yes, we have a certain degree of anxiety
because these are non-state actors affecting supply lines, and should those supply lines be disrupted totally. Just now, there is some rerouting taking place on account of that uncertainty, and that rerouting results in higher freight costs, higher insurance costs. But as it is, I say with my fingers crossed that we are reasonably confident that given the goodwill around, these factors making for anxiety will be contained, and we do not have an all-out escalation. Now, if an all-out escalation of hostilities takes place and there is a total supply line, I don't want to name the areas, it's very clear, then of course there would be a cause for concern. But so far the international community, their geopolitical equations and the marketplace has adjusted. When I last looked at the price of oil, it had come down, I think yesterday when I inquired, to $77 a barrel. My own feeling is that if the uncertainty in the Red Sea area, particularly the attacks by the non-state actors, if these were not to recur or not in that frequency, or most important, if they were not to escalate and exacerbate, I think this is a manageable situation. Thank you. Sri M. Thambidurai, Manyam M. Thambidurai. Deputy Chairman, sir. Minister, in his reply, he said regarding this natural gas infrastructure, in that he replied, they are going to put operational natural gas pipeline has increased. Because there is apprehension in Tamil Nadu farmers, they are opposing this kind of putting gas lines in the agriculture land, because there are a lot of agitation taking place. Whether the minister aware that and come forward to solve the Tamil Nadu agriculture farmers must not affected put this kind of gas line through that land. Instead of that, there had been roads, national roads, they can bring that. You have put your question. Thank you. Sir, I am grateful to the honourable member for having raised this issue. Of course, he wants to inquire whether I am familiar with it. So I am not only familiar with it, I spend a large part of my waking day to resolve these problems. I just give him one example. I wrote a letter to the Honourable Chief Minister on 2nd October 2021. And this is just one letter I've written. Here, Tamil Nadu Chief Minister. Since you are asked a question on Tamil Nadu, I refer to them. And I said that the Kochi, Kutanad, Mangalore pipeline, KKBMPL project, was conceptualized as part of the ambitious national gas grid. This pipeline was planned to evacuate the regasified LNG from Kochi LNG terminal to transport to various consumers in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. GAIL has been entrusted to implement this. But you see, the fact that arises, the same pipeline, when it went through Kerala, 514 kilometers has been completed. It goes to Karnataka, 58 kilometers has been completed. And Tamil Nadu, 329 kilometers not completed. Now, whenever the state government is unable to implement a project in terms of the obligation it has, so we have been in constant touch with them. We received periodical assurances that they are attending to it. But as I said, sir, all the other states, Kerala done, Karnataka done, and Tamil Nadu, it's still under implementation, and we would... Please, thank you. Now I'm coming to that. Farmers... Thank you. Thank you. Now question number 17, Mani Sri Raghav Chaddha. Mani Mantri ji. उत्तर सभा के पटल पर रख दिया गया है। First supplementary, Mani Raghav Chaddha ji. सर, मेरा पहला सवाल भारत देश के एमएसएमई सेक्टर में जो सिकनेस है उससे संबंधित है। सवाल बड़ा सरल है। वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 13,000 एमएसएमई बंद हुई, जो पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। हम ये अगर अनुमान लगाएं कि 50 लोग एक एमएसएमई में भर्ती होकर काम करते हैं, रोजगार लेते हैं, तो अगर 13,000 यूनिट्स बंद होती हैं तो लगभग 6.5 लाख लोगों की नौकरी चली जाती है। और एक फैक्ट और देके मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 17-18, 19-20 में भारत देश के जितने एक्सपोर्ट्स होते थे उसका 50% हिस्सा लगभग एमएसएमई सेक्टर से आता था।
आज वो 50% से घट के 44% हो गया, यानी कि एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स भी गिरते जा रहे हैं। सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से ये है कि जिस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए, जिसमें गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण है और खास तौर पे उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है कि एमएसएमई के अंदर 19, 20, 21 और 22-23 से 3-4 सालों में जीडीपी में गिरावट आई है, ये उसका कहना है। वैसा एक्सपोर्ट में भी सर, एक्सपोर्ट में 2 साल में कोरोना के कार्यकाल और जीडीपी भी कोरोना के कार्यकाल में 2% से गिरा, बात सही है, 2% से, मगर 21-22 में फिर 29.1% वापिस इंक्रीज हुआ। अभी 22-23 में तो अबाउट 30% हो ही गया होगा। तो कोरोना के कार्यकाल में गिरावट हुई, मैं मानता हूँ। एक्सपोर्ट भी कम हुआ, वो भी मैं मानता हूँ, मगर अभी एक्सपोर्ट भी इसमें 45.83% हो गया है, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण कोरोना के कार्यकाल में देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त जो योजना अलग अलग दी, क्रेडिट गारंटी योजना जो उन्होंने चालू की, उसके अंदर एमएसएमई के ऊपर कम से कम 2,41,000 करोड़ जो एमएसएमई बंद हुई थी वापस चालू करने के लिए उनको पैसा दे दिया गया, लोन दे दिया गया। इससे अभी 45.83 हो गए है। अभी मैं मानता हूँ कि इसमें एक और भी है कि हमारा जीएसटी जो 19-20 में 5 लाख करोड़ था, 20-21 में कम हुआ, 4.7 लाख करोड़ हुआ था। अभी 21-22 में 5.3 अभी बढ़ गए है, पहले इतना ही हो गया, अभी इससे भी 2% एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। तो आपने कहा गिरावट हुई थी कोरोना के कारण, मगर अभी फिर एमएसएमई में अलग अलग योजना देकर वापिस जो उद्यमी बनते वो चालू हो गए और अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। उसका फिगर मैं जीएसटी के माध्यम से मैं कहा। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री ब्रीफली। पहले मैं जरा एक सवाल सेकंड सप्लीमेंट्री आप सवाल मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला वो गलत बोला है, तो मैं आप उसके लिए दूसरे रास्ते हमारे राघव चड्ढा जी आप सवाल पूछें। अच्छा, मैं आगे चल मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप सवाल पूछें। एनपीएज और लोन डिफॉल्ट्स की जहां तक बात है, इस एमएसएमई के सेक्टर में यह देखा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोन्स लिए गए, चाहे सरकार की किसी योजना के तहत लिए गए या बैंकों से लिए गए, वो लोन डिफॉल्ट हो गए, सिंपली बिकॉज वो सेक्टर पूरी तरीके से गिरता जा रहा है पिछले 3-4 वित्तीय वर्षों में। खास तौर पे भारत सरकार एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, ECLGS। इसमें सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि एक अधिकांश हिस्सा जो लोन के माध्यम से एमएसएमईज को दिया गया था वो एनपीए हो गया है, उस पे डिफॉल्ट हुआ। आपका सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटा एंटरप्राइज होता है, जो गरीब लोगों को रोजगार देता है, उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और खास तौर पे एनपीए डिफॉल्ट से डील करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले कहा कि कोरोना के कार्यकाल में कई उद्यमी बंद हुए थे, कामगार भी चले गए थे। उस वक्त गिरावट जरूर थी जीडीपी में। अगर उसी तरह लोगों ने लोन भी रीपेमेंट न किया, एमपी बहुत सारे अकाउंट एमपी हो गए, इसलिए इमरजेंसी क्रेडिट योजना 5 लाख करोड़ देश के पंतप्रधान जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए दिए। उसमें से 2,41,000 करोड़ ये उद्यमी के लिए, और जिन्होंने का एमपीए हुआ उनको भी वापस लोन देने के लिए
उसका जो लिमिट था 1 करोड़ वो 5 करोड़ तक लेके गए और उनको पुनर्जीवित करने का काम सरकार ने किया, इसलिए उत्पादन फिर बढ़ा। पहले इतना ही उत्पादन बढ़ा, कुछ घाटा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो सभी इंडस्ट्री फिर चालू हो गए हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री एस सेलंगवेथी, माननीय श्री एस सेलंगवेथी, एस सेलंगवेथी, प्लीज। Honorable Chairman, sir, there is a survey has been conducted recently with input from 2,600 formal MSMEs from 5 states and Union Territory of Puducherry. One of the two surveyed MSME want an instant line of credit, but the non-availability of the short-term credit is the biggest hindrance for the MSMEs. So I would like to request our Honorable Minister to look into the demand and the request of the MSMEs. Thank you. सर, सभापति महोदय, क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जो उद्यमी बंद हुआ उनके लिए लोन की भी व्यवस्था की गई, मदद भी की गई है। मैं समझता हूं जहां भी और भी उद्यमी को दिक्कत है उनको हेल्प करने के लिए पीएम जिप से लेकर अलग अलग 8-10 योजना है, उनके माध्यम से हम मदद करेंगे। मगर इंडस्ट्री देश का एक्सपोर्ट बढ़ाते, जीडीपी बढ़ाते, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मैं समझता हूँ जो भी करना इंडस्ट्री के लिए उसके लिए हमारे पंतप्रधान तैयार है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 लाख करोड़ इस डिपार्टमेंट के लिए इंडस्ट्री के लिए दिए है, उसमें हम उस जो हमारे सदस्य ने कहा उनको हम मदद करेंगे। माननीय शक्ति सिंह गोयल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि जो रिटर्न आंसर दिया है उसमें कहा है कि एमएसएमई ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इन ऑल इंडिया जीडीपी, वो जो आंकड़े दिए हैं 2019-20 में 30.5% था, 20-21 में 27.3% था, 21-22 में 29.1। इट मीन्स अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ तो कोरोना की सबसे ज्यादा इंपैक्ट 19-20 में होनी चाहिए, तब तो 30.5% था। कोरोना की इंपैक्ट उसके बाद नहीं हो सकती है 21 में 22 में, तो वो कम क्यों हुआ? और आप सिर्फ बड़े उद्योग की चिंता करेंगे तो लघु उद्योग का क्या होगा? धन्यवाद। प्लीज प्लीज। भाई साहब, लघु उद्योग की संख्या जो बंद हुई वो फिर सभी चालू हो गए, चिंता की बात नहीं, फिर सभी चाहिए। इसलिए उत्पादन में जो जीएसटी आपको पढ़ के बताया, आज भी 5.3 लाख करोड़ है, कम नहीं हुआ है। जो पहले 19-20 में था 5 लाख करोड़, वो अभी बढ़ गए है। और इसमें मैं कहता हूँ 20-21 में 27.2 वो कोरोना का कार्यकाल है, कोरोना का कार्यकाल। और जब भी कामगार फैक्ट्री छोड़ के भागे थे, छोड़ के गए थे, तो अभी फैक्ट्रियां चालू होने के बाद अभी 21-22 में वो प्रमाण जीडीपी का बढ़ गया है। और इसलिए बढ़ने के कारण अभी पूर्ववत परिस्थिति निर्माण देश में हुई है एमएसएमई के बारे में। labor welfare and employee wellness in the MSME sector. धन्यवाद। Sorry, repeat. Please. माननीय कार्तिकेय शर्मा जी सवाल पूछें। I would like to ask the Honorable Minister about the steps taken to ensure labor welfare and the employee wellness in the MSME sector. Thank you. सभापति महोदय, काफी कदम उठाकर ये इंडस्ट्री को मैं फिर से चालू करने की कोशिश हुई। मैं सभी आपकी अनुमति हो तो मैं सभी पढ़ के बताता हूँ। आप ब्रीफली बता दें, ब्रीफली बताएं। निर्यात में
एमएसएमई के हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम तहत व्यवसाय की सुगमता और संवर्धन और क्रेडिट की उपलब्धता में सुधार के विभिन्न पहल माननीय मंत्री जी प्लीज माननीय मंत्री जी आप जो सवाल है कि प्लीज आपस सवाल ये है कि वर्कर्स के वेलनेस के लिए वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है क्या के लिए वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है माननीय सदस्यगण प्लीज नहीं आप सुनिए प्लीज सर प्लीज सर ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ वो उद्यमी चालू होने से वर्कर का प्रॉब्लम हल होगा ऐसा नहीं विदाउट फैक्ट्री बंद रहेगी तो हल होगा ये प्रॉब्लम वर्कर्स के वेलनेस वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है आप माननीय सदस्य को बुलाकर बता देंगे प्लीज ठीक प्लीज बैठ जाए क्वेश्चन नंबर 19 श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार नॉट प्रेजेंट अच्छा माननीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सप्लीमेंट्री as per section 90 of the AP Reorganization Act 2014 it's question number 19 let him ask please do not interfere Mr. Gokhale please take your seat please Sir, why is question number 18? Please, I will come to that. Yes, it's good. I'll come. Please. I'll come back. Please. Sir, as per section 90 AP Reorganization Act 2014, Polavaram irrigation project was declared as a national project. It will come back. Please, I'll come to 18. After this, I'll come to 18. Please. Please. Sir, from 2020 till today, no progress has taken place. And as per Polavaram project, how much time to complete the project it will take? Thank you. माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत सरकार ने बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके निर्माण की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की सरकार के पास में, निर्माण का काम करना, उस पर पहले खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सरकार की है। भारत सरकार मात्र उसकी वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराती है। कार्य प्रगति पर है। और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो काम अब तक हुआ है, उस काम के अनुरूप अलग अलग जो 8 तरह के कंपोनेंट्स इसमें हैं, उन सब की जानकारी अब माननीय सदस्य को मैं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूं। One second. Sir, honorable members, we will take question number 18, not an occasion to be agitated. Sometimes human error. Sir, one second. Supplementary, okay, sir? Supplementary, sir. Question number 19, second supplementary. Sir, I'll come to question number 18. Would you please take your seat? Would you please take your seat now? Ma'am, please, 1 second. It's a very good point that a question should not be skipped. Is there anyone in the house who has not heard once? We are here to make immediate rectifications. Question number 18 will be taken for sure. Let us first go through question number 19.
Second supplementary, sir. Human error. 1 second. Sir, I was on the chair. It was just it slipped through the computer. It went ahead. And I corrected it that I will come to 18. Please. I already have spoken, madam. Please. Please, ma'am, these will not go on record. Ma'am, your observations will not go on record. I'm so sorry. These are intemperate observations. Sorry, absolutely. Please, absolutely, no. House. कौन सी second supplementary? हो गई second supplementary श्री कनक मेडला. Sir, second supplementary. Supplementary, sir. Sir, the Honorable Minister has stated some... I'll come to that, ma'am. Nothing will go on record. Progress of the work is going on. But, sir, how much progress from 2022 till today taken place? How much is the amount invested for that purpose till today? Honorable Minister. Madam, please, no cross talks. No, please. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. Yes, Honorable Minister, please continue. Only what the Honorable Minister say will go on record. जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, Honorable Minister, और मैंने कुछ पहले सप्लीमेंट्री के प्रत्युत्तर में भी निवेदन किया था कि पहले खर्च करने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एक्सपेंडिचर्स is the onus of state government, and after spending the money on different components of construction, the state government raises the bill with Polavaram Project Authority, and then it comes to the government of India. But for the sake of answering the question which has been asked by Honorable Member, I wish to submit that in 2021, 2,234 crores have been released to PPA, and the same amount has been released to Government of Andhra Pradesh as reimbursement by PPA. In 2021-22, 751 Mr. crores Shakti Singh Gohil, 47 crores take your seat. Dipender Huda, and you are getting used to creating chaos unnecessarily. 1,671.323 crores have been released to PPA, and further PPA released the same amount to Government of Andhra Pradesh. Take your seat. In current financial What year word are you using? 24, so far No. I'm surprised. 7 crore rupees have You been are released using these kind of words in this by house. Government of India to Polavaram These are Project expense. Authority, Expense. and a similar amount Sorry. has been transferred by Take your seat. Polavaram I'll come Project back. Authority. I'll come back to Government you of after Andhra this Pradesh. question is over. Please take your seat. I'll come back to you. I'll come back. Take your seat. Nothing will go on record. You are not her spokesperson. She herself is a very senior member. No, you don't have to support her. She's a very senior member. Sorry. Please continue. Honorable Minister. Doctor, 1 second. Take your seat. Take your. Would you take your seat? Should I name you? Mr. Dipender Huda, I will name you. Please. No. What do you mean by it? Sit down. Honorable members, please take your seat. Rao Sahab, on your seat. Take your seat. I have already indicated that after I am through with question number 19, I will take up this issue. When we will take up this issue, in a composed manner, try to find a way out. Jaya Bachchan ji is a very senior member. If she has a sentiment
that is bound to be very serious with me. Let me go through question number 19, then I'll come to question number 18 and the concerns that are being raised. Please. Dr. C.M. Ramesh. Sir, I have gone through the answer. This diaphragm wall was damaged in 2020. Now we are in 2024. Have you not understood me? I can't help you. Sorry. Please continue. This is very important for Andhra Pradesh. When it will be completed, when the diaphragm wall details will come, only the diaphragm wall damage since last 4 years. 4 years the project is stalled, sir. When it will be completed, when the diaphragm wall details, national agency, international agency, when they will give? Honorable Minister. जो माननीय सदस्य ने कहा है कि डायफ्राम वॉल 2020 के बाढ़ के समय में डैमेज हुई थी, लेकिन जब उस पर काम करना प्रारंभ किया था और ये विषय संज्ञान में आया, उसके बाद भारत सरकार के नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के जो है विशेषज्ञों ने जाकर के वहाँ इस विषय पर पूरा अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। 2 तरह के ऑल्टरनेटिव्स उसमें दिए गए थे कि एक जो एग्जिस्टिंग वॉल है उसी को रिपेयर किया जाए और दूसरा जो था कि नई डायफ्राम वॉल बनाया जाए, क्योंकि डायफ्राम वॉल किसी भी बांध की स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के जितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस विषय में कहीं भी कोई, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी लिख करके दिया है कि जो कंसेशनर है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर इसको रिपेयर किया जाए तो ये बांध के भविष्य को लेकर के उचित होगा या नहीं। हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को हायर किया है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसकी रिपोर्ट आने के साथ ही इस दिशा में, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी बांध के भविष्य को लेकर के एक जो है समस्या हो सकती है, इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, is it true that the World Bank has come with a report that has indicated that by 2030 per capita water availability in India will shrink to half and push the country into water scarce category from the existing water stress category? Sir, in Marathwada in Maharashtra, this is a water scarce area, and what measures are proposed to augment the regulation and storage capacity of the Jaikwadi Dam to alleviate the water scarcity in the Marathwada region and bridge its divide with the North Maharashtra? Honorable Minister. महोदय, हालांकि मूल प्रश्न पोलावरम से संबंधित था, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आज़ादी के समय में जितनी थी उससे घट करके निश्चित रूप से कम हुई और उसके अनेक कारण हैं। वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट की माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके उसमें कितना तथ्य और उन्होंने किन विषयों के आधार पर या किस अध्ययन के आधार पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता विस्तार से, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो है 2030 तक या 2050 तक भी जिस तरह की चिंताजनक स्थिति की कल्पना माननीय सदस्य ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर की है, वैसी स्थिति नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टिकोण से कि देश की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकें और आने वाले समय में भारत जिस तरह से 2047 तक विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, उसमें पानी की आपूर्ति कहीं बाधा न बने, इस दृष्टिकोण से पानी का विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग विभागों में जो है निर्णय किया जाता था, उसको एक साथ मंत्रालय बनाया गया और पानी के परिप्रेक्ष्य में जितने तरह के जो है कंपोनेंट्स हैं, उन सब पर भारत सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा में काम कर रही है। उसमें अनेक उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। धरातल पर पानी रोकने के दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और भारत की सबसे ज्यादा निर्भरता, विश्व में सबसे ज्यादा निर्भरता जो है वो भूगर्भ के जल पर है। और मैं माननीय सदस्य के लिए और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह के एफर्ट्स पिछले 10 साल में लिए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस विषय पर चर्चा की गई, देश में इस तरह का वायुमंडल बना, पानी के रिचार्ज को लेकर के जो वायुमंडल बना, उसके चलते हुए मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि जो भूगर्भ के जल का स्तर निरंतर देश में गिर रहा था, हमने हर साल का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। पिछले 4 साल से पहले वो स्थिर हुआ था और अब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है।
जहां पानी की कमी हो रही थी हर साल, वहां अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में आखिरी रिपोर्ट आने तक, पिछले साल की रिपोर्ट में भी और इस वर्ष की रिपोर्ट में भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। हमारे सेफर ब्लॉक्स और ओसीएस कैटेगरी के जितने ब्लॉक्स थे उन सब में इंप्रूवमेंट हुआ है और 10% से ज्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे ओसीएस कैटेगरी से बाहर निकल करके सेफर जोन्स में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह संपूर्ण सफलता है, लेकिन जिस दिशा में हमने प्रयत्न किए हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप उपलब्धता, भूगर्भ के जल की उपलब्धता की दिशा में हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर पहली बार अटल भूजल योजना के तहत काम करना प्रारंभ किया है, उसके परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये क्योंकि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों को इस पर और अधिक गंभीरता और प्राथमिकता के साथ में काम करना पड़ेगा। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके लिए सबसे बड़े उपभोगकर्ता कृषि क्षेत्र में हम पानी के उपभोग को किस तरह से कम कर सकते हैं, इस पर राज्य सरकारों को समन्वित दृष्टिकोण से प्रयास करना पड़ेगा। श्री GVL नरसिम्हा राव। Thank you, Chairman, sir. Sir, this question relates to Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh. And a number of irrigation projects in Andhra Pradesh have been languishing, and what projects which state government was required to undertake have not been done for 60 years. I'd like to congratulate and compliment the government and Honorable Prime Minister Modi ji for sanctioning huge amount of funds for Polavaram irrigation project as a central project, national project. I'd like to ask the Honorable Minister the amount of money that has been released so far under Polavaram irrigation project, and I have requested in the past to name it as Pradhan Mantri Modi Polavaram irrigation project, because this project, every rupee on this project is being spent by the central government. So I would like the Honorable Minister to respond to my appeal to name it as Pradhan Mantri Polavaram irrigation project, and whether central government will take over the construction of the project, because the state government has not been moving fast Honorable enough Minister. in completion of the project. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि अब तक भारत सरकार ने इस पर कितना खर्च किया है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2014-15 में जब इसे भारत सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी थी, तब से लेकर के अब तक 15,146 करोड़ रुपए की वित्तीय एलोकेशन भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में दे चुका है, जो आंध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। Honorable members, I'll now take question number 18, which could not be taken on account of certain technical situations. But I would like to reassert that we have in Harivansh ji a man of impeccable credentials, a man of great integrity. Human failure is something which is associated with all of us. If it has hurt someone, I take the responsibility, but I will indicate to all of you, think within, we could not have had a deputy chairperson with more sterling qualities, independence more than I have, and respect for all the members. It was slightly hurtful for me that some reflections came to be made about such a person. If there are some hard feelings, we need to forget about it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde, question number 18. All right. I'll give floor to Jaya Bachchan ji. And I would request Jaya Bachchan ji. Thank you very much. Jaya ji, 1 second. You are a very senior member. Ji. Even otherwise in the country, whatever you say is looked up to and well regarded. So you will cheer us, all of us. अच्छा सर, मुझे बोलने तो दीजिए, आप ही बोलेगा। And I am sure a great actor like you must have taken money retakes also. सर, money retakes. सर, डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए बहुत रिगार्ड है और आज से नहीं, बरसों से उनकी बहुत इज्जत करती हूं। उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा।
ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन कहेंगे हम बैठ जाएंगे, मगर कोई और सदस्य हाथ हिला के अगर हमें बोले तो हम नहीं मानेंगे। दिस इज आवर राइट टू क्वेश्चन। You tell us कि सवाल नहीं ले सकते, there are problems, we'll take it later. We understand, we are not school children. But treat us respectfully. Point made. Thank you. Honorable members, I think no one will disagree with the sentiment. The House is under the control of rules and the person presiding. And I am sure everyone will follow. This is a good manner, this side or that side. The members must not exchange interest. Everything has to be through the chair. Question number 18, Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Not present. Honorable Minister. On the table of the House. Supplementary, Saket Gokhale. Thank you, sir. So my question is, in the interim budget 2024 that was presented by the Honorable Finance Minister, allocation for the UDAN scheme has been slashed by 60%, 60%. Of the 1,300 valid routes allotted under UDAN 5.0, 501 routes have been cancelled already. So my question is, sir, why has the budget for UDAN been reduced by 60% from 1,244 crores to just 850 crores? And number two, what steps are being taken to revive the 501 cancelled routes which are allocated under UDAN 5.0? Honorable Minister. Question on budget, but let me clarify. Where UDAN scheme is concerned, 529 routes are already operational. No route has been cancelled. There is a system in place by which the routes are allocated. And I'll state the system is as follows. There is a valid bidding that is done. Airlines are called to bid for a particular route. If an airline bids for a particular route, that route is allocated to it. Based on this, an underserved or unserved airport is made up in terms of whatever facilities are required by the AAI so that the flights can take place from that particular airport. Now, if that airline walks away from that route, the bidding takes place again in the next round of bidding. So there is no route which has been allocated, no route which has been cancelled. It all depends on bidding and the aircraft. Sir, will you please... Not a good... Please, let the minister complete. What is this? Mr. Gokhale, 1 second. Is it according to rules? You don't hear the minister out? Please. You must maintain some decorum. Let the minister complete. If you still have an issue, rules provide for a mechanism. Please, Honorable Minister. And there is no pre-allotment of routes anywhere. I'd like to underline that aspect. The airlines, if they walk away from a particular route, after a particular period of time, that route is bid again. An airline has 2 years to start a particular route. If it doesn't start a route, it goes into the next bidding. And therefore, that route remains unutilized till the time the next bidding takes place. Vandana Chauhan, please. Vandana Chauhan. Sir. Vandana Chauhan. Will you first take your seat? First, 1 second. Will you first take your seat? First, no, I am saying take your seat. First you take your seat. Is it the way to conduct proceedings? Sit down first. Sit down first and listen to me. If a minister responds to a question and if an honorable member, for one reason or the other, is not satisfied, that could be on several grounds. One, not understanding the perception of the minister, or the minister not responding adequately. In both the situations, it is not the mechanism to jump on the chair. One second. Sit down. You still don't understand. I'm sure senior leaders of your party will persuade you to maintain decorum. Vandana Chauhan. Thank you, sir. Sir, every airport is supposed to have proper maintenance and service delivery for its commuters, sir.
I would like to raise the question particularly in the case of Pune Airport, which I've raised several times in this House. So the Pune Airport has been seeing deteriorating quality, and the rank has been slipping down lower and lower. Now it is 17th position in a survey conducted by the Airport Council International. So I would like to ask the Honourable Minister, what are the steps being taken for such slipping down ranking airports, and particularly for the Pune airport? सवाल है, इसलिए महाराष्ट्र तक ही का कहा गया राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो राज्य सरकार की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सिविल एविएशन उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है? Your supplementary. Sir, supplementary is this: why is a new airport terminal All right, Honourable Minister. Why is it waiting for an inauguration for 5 months? पुणे के इनॉग्रेशन के लिए 5 महीने का इंतजार नहीं हो रहा है, वहां पर काम चल रहा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। Question number 20, Shri Sujit Kumar. Honourable Minister. सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। Supplementary one. Shri Sujit Kumar. सर, टेक फॉर ट्राइबल करके एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव एमएसएमई मिनिस्ट्री ट्राइफेड के कोलैबोरेशन में शुरू किया था। सर, ये इनिशिएटिव जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आईटी स्किल, उनका बिजनेस स्किल्स और सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए सर ये शुरू किया गया था। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, ये इनिशिएटिव का प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितने ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स इससे लाभ उठा चुके हैं और इसको आगे कितने सालों तक चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इन्होंने जो बात की है उसके लिए एसटी के लिए, ये जितनी भी योजनाएं एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं पूरे देश के लिए चलाई जा रही हैं और विशेष रूप से पीएमईजीपी जो योजना है उस योजना के माध्यम से हम लोग जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी मदद करते हैं। तो इस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से हम लोग देखते हैं तो भारत में पूरे देश में जो हम लोगों ने सब्सिडी अगर गरीबों को दी है तो 2.4 हज़ार करोड़ रुपए दी है और इसमें जो योजनाएं हैं वो करीब 65,000 योजनाएं हैं जिनमें हम लोगों ने मदद की है और उसी तरीके से रोजगार अगर दिया है तो 5,52,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। वो विशेष रूप से जो पीएमईजीपी योजना है सर, ये ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए इन दोनों में सब्सिडी का अलग अलग प्रावधान किया गया है। अगर शहरी कोई एरिया है और जनरल लोग हैं तो उसे 15% की सब्सिडी दी जाती है और यदि वो ग्रामीण में है तो 25% की सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई एससी एसटी है, यदि वो शहर में रहता है तो सर उसे 25% की सब्सिडी दी जाती है और यदि वही ग्रामीण में रहता है तो उसे 35% की सब्सिडी दी जाती है। इस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन पूरे गांव में पूरे देश में किया जा रहा है। अब इन्होंने विशेष रूप से जो पूछा है, आज हम उड़ीसा के बारे में जो हम लोग यहाँ सब्सिडी लेके आए हैं, करीब 69 करोड़ रुपए हम लोगों ने उड़ीसा में सब्सिडी दी है और विशेष रूप से इस परियोजना में करीब 2,100 हजार परियोजनाओं को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है और करीब 17,500 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था कुमार सर, मैंने सवाल पूछा था टेक फॉर ट्राइबल्स जो स्कीम है उसके बारे में, पीएमईजी के बारे में नहीं पूछा था सर, लेकिन मैं उनसे बाद में आंसर ले लूंगा। सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है सर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का एक रिपोर्ट आया था 2022 में। उस रिपोर्ट में सर दर्शाया गया है कि जो एमएसएमईज हैं उनका सर क्रेडिट गैप है 20 से 25 लाख करोड़ रुपया और सर ये तो जनरल सर एमएसएमईज के लिए, ट्राइबल लेड एमएसएमईज या ट्राइबल लेड एंटरप्रेन्योर्स इनका क्रेडिट गैप सर क्लोज टू 90% है। तो सर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी सर अवेल करने के लिए क्या क्या स्कीम सर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से ट्राइबल जो हमारे लोग हैं उनकी मदद के लिए और पूरे देश में जो हमारी एमएसएमई की योजनाएं हैं वो पूरे सभी के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से हम लोग देखें तो आज हम लोग टीसी बना रहे हैं, पूरे देश भर में टेक्निकल सेंटर बना रहे हैं। वो करीब 53 टेक्निकल सेंटर हैं, वो 20 नए बना रहे हैं जिससे 125 करोड़ की लागत से पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग देखें एक्सटेंशन सेंटर बना रहे हैं, 100 करीब वो 10 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 6,000 करोड़ का बजट रखा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ
कि हमारी विश्वकर्मा योजना है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को लागू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लागू की है, उसके लिए भी गरीबों के लिए है। ये उन गरीबों के लिए है जो छोटे छोटे लोग हैं और 18 प्रकार के ट्रेड में जो घर बैठे काम करते हैं, उनके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो करीब 88 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे भी ये रजिस्ट्रेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं, ईडीपी योजना, स्फूर्ति योजना, SC ST हब, ये सब गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए ये काम कर रहा है। डॉक्टर शांतनु हुसैन। Sir, through you, my supplementary question on MSME to our respected minister is, though as per national record, West Bengal ranks second in MSME, where we are having nearly 90 lakhs of MSMEs and we have created nearly 136 lakhs of employment through that. My question is, instead of getting proper cooperation, these non-BJP ruled states, why they are being looked after with stepmotherly attitude, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये योजनाएं पूरे देश में चलाई जा रही है। जो भी योजनाएं हों, चाहे हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, चाहे हमारी जो प्रधानमंत्री अभी विश्वकर्मा योजना हो, और जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी योजना का क्रियान्वयन बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। इन्होंने अपने बात की है, वेस्ट बंगाल की बात की है, विशेष रूप से वहाँ जितने भी हैं उन्हें सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में वेस्ट बंगाल में PMEGP के अंतर्गत जो लाभ इन्हें मिल रहा है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, चूँकि पश्चिम पश्चिम माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो है ओडिशा का है। ये डिटेल सब मांगा है ओडिशा का। MSME के बारे में अलग अलग स्कीम का इन्होंने डिटेल मांगा है। ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, तो बंगाल के लिए वो अलग प्रश्न पूछे, हम डिटेल में इसके बारे में आंसर देंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, given the initial challenges faced by MSMEs in setting up digital assets and ensuring cyber security, it is essential for them to enhance understanding and integration of cyber security measures. MSMEs, sir, are facing capital constraints, struggle with a shaky technology base, hindering growth and recognition. In addressing these issues, what measures does the ministry propose to make MSMEs more reliant on technology and overcome growth bottlenecks and add to the economy in full potential? Question hour over.